हेलो एवरीवन। आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज ऑन कंटिन्यूटी। वी ऑलरेडी नो द कॉन्सेप्ट ऑफ द कंटिन्यूटी एंड द फंडामेंटल बेसिक थिंग अबाउट द कंटिन्यूटी। सो नाउ देयर आर ओनली टू फार्मूलाज। तो हमारे पास दो फॉर्मूलेज थे यहाँ पे। पहला लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू द फंक्शनल वैल्यू। दूसरा हमारे पास था अबाउट द कंपोजिट फंक्शंस। दो फंक्शन को हम क्या करते हैं, मिलाते हैं, कंपोजिट करते हैं। देन वी हैव टू फाइंड आउट द कंटिन्यूटी एट सम स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ दिस कंपोजिट फंक्शन। सो नाउ दिस इज द एक्सरसाइज 5.1। एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 5.1 है। So let us start. Question number 1. Question number 1 said that prove that function fx which is 5x minus 3 is continuous at x0 minus 3 and 5. So these are the 3 points at which we have to find out whether the function is continuous or not. तो इसके लिए हमारे पास एक मेथड है, we have to follow the method. सो नाउ इस मेथड से पे हम क्या यूज करते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट वी विल यूज। सबसे पहले हम निकालते हैं फर्स्ट फाइंड द कंटिन्यूटी एट द पॉइंट। तो वन बाय वन हम यहाँ पे जाएंगे। फर्स्ट वी गो एक्स इज इक्वल टू 0 पे चेक करते हैं। हियर 0 पे सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट। This is the method of solving this one, left hand limit at x is equal 0। इसको लिखने का तरीका भी है। तो ये हमारे पास तरीका है। लेफ्ट हैंड के लिए हम क्या करते हैं, वी आर अप्रोचिंग 0 टू फ्रॉम द नंबर लाइन से पे 0 अप्रोच करेंगे नेगेटिव साइड से। दिस इज अवर नंबर लाइन। अगर ये मेरे पास नंबर लाइन, ये ओरिजिन आपके पास x is equal 0, वी आर अप्रोचिंग 0 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड से 0 की तरह अप्रोच करेंगे। सो दैट्स वाई यहाँ पे हम क्या करेंगे, 0 के पर माइनस लगा दो, या 0 माइनस यहाँ पे आप दे सकते हैं। सो नाउ एफ एक्स इज इक्वल, पुट द वैल्यू ऑफ एफ एक्स हियर। तो अगर ये वैल्यू यहाँ पे प्लेस करेंगे तो x टेंड्स टू 0 माइनस 5x minus 3, 5x minus 3। either we have to substitute x की जगह सीधे 0 रख सकते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, 5 इंटू 0 माइनस 3, दिस वैल्यू कम्स आउट -3 मेरे पास हो जाता है। एंड दूसरा तरीका है कि हम इसको थोड़ा सा चेंज कर दें। सो नाउ दिस इज ऑल्सो रिटन एज लिमिट। हम क्या करेंगे, x की जगह प्लेस कर देते हैं 0 माइनस h। हमें 0 पे आपको लिमिट निकालनी है। वी हैव टू फाइंड आउट लिमिट एट द पॉइंट ऑफ 0 माइनस h। एंड यहाँ पे क्या करेंगे, h टेंड्स टू 0, तो h टेंड्स टू 0 कर देंगे। तो नाउ इट बिकम्स, नाउ फाइनली h टेंड्स टू 0। इसमें आप हमको रखना है 5 टाइम्स ऑफ 0 माइनस h, 0 minus h and this 3. Now just simplified it या just h की जगह 0 रख देते हैं। तो what it comes out, 5 into 0 minus 3। तो ये वैल्यू -3 आ गया। दिस इज अवर लेफ्ट हैंड लिमिट। नाउ फॉर द राइट हैंड लिमिट। सो राइट हैंड लिमिट हम आते हैं, राइट हैंड लिमिट at x is equal to 0 is equal to limit 0 plus, we are approaching 0 from the right hand side। तो राइट हैंड साइड से दिस इज आवर नंबर लाइन। ये नंबर लाइन है, 0 की तरफ अप्रोच करेंगे फ्रॉम इनफाइनाइट साइड टुवर्ड द 0। तो ये आगे 0 प्लस, नाउ दिस इज योर एफ एक्स।
अगर हमको डायरेक्ट जाना है तो ये वाला मेथड इस्तेमाल करेंगे। इफ यू गो विद द हेल्प ऑफ h, तो यहाँ पे प्लेस करेंगे x इज रिप्लेस्ड 0 प्लस h एंड h टेंड्स टू 0, ये हम मेथड अप्लाई कर रहे हैं। नाउ दिस बिकम लिमिट h टेंड्स टू 0 and 5 times of 0 plus h minus 3 and इसको बंद कर दें स्क्वायर ब्रैकेट। नाउ इट बिकम्स, नाउ फाइनली h की जगह 0, नाउ इट बिकम्स 5 into 0 minus 3, again minus 3. So now this is the our right hand limit. Now for functional value, we need also the functional value. For finding the functional value हम क्या करेंगे, the value of fx at 0, directly place x की जगह 0, 5 into 0 minus 3 is equal to minus 3. So यहाँ पे all thing हमको क्या दिखाई दे रहा है, लेफ्ट हैंड लिमिट -3, राइट हैंड लिमिट -3, फंक्शनल वैल्यू -3. इट मीन्स दैट लेफ्ट हैंड लिमिट is equal to right hand limit is equal to the functional value, all are equals, which is -3. It means that fx is continuous, fx is continuous at x is equal to 0. तो ये हमारे पास हो गया. This method we will follow here. Same methods we will use for finding the continuity at x is equal to -3. Now तो second point at point x is equal to -3. So here our left hand limit निकाल लेते हैं, will be x tends to -3 के power minus of fx, and here fx is equal to this one, limit x tends to -3, putting the value of fx which is 5x minus 3. तो ये हमारे पास हो गया एक्सप्रेशन. सो अगर हमें जाना है h with the help of the h, now we have to place here, place x is equal to -3 minus h. तो लेफ्ट हैंड साइड से जा रहे हैं. if this is -3, we are approaching from the left hand side. तो लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करना है -3 की तरफ, टुवर्ड्स -3. So from the minus infinite side, from the minus infinite towards -3. Yes, ऐसे. So now here what it becomes? Now it becomes limit h tends to 0, 5 times of 3 minus -3 minus h, bracket is closed, and again -3 is outside है, इसको मिडिल ब्रैकेट से बंद कर दें. नाउ इफ यू सिंप्लीफाइड दिस, व्हाट कम्स, तो ये मेरे पास आ जाता है लिमिट h टेंड्स टू 0, ओपन द ब्रैकेट, -15 -5h -3. तो यहाँ पे अगर h डायरेक्टली हम 0 प्लेस कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, इट बिकम -15 -15, ये 0 हो जाएगा -3. सो इट कम्स आउट -18 द वैल्यू ऑफ लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू -3. सो नाउ नेक्स्ट हम जाते हैं, वी लाइक
to find the right hand limit. Now for the right hand limit at -3, चले आ जाते हैं right hand limit. सेम प्रोसीड्यूर फॉलो करेंगे. लिमिट x टेंड्स टू -3, बट यहाँ पे प्लस आ जाएगा. And putting the value of fx is this 3x minus 5. Next thing, हमें अगर if you go for h, so यहाँ पे प्लेस कर दो. Putting the value of h is equal to -3 not h, x is equal to -3 plus h. So we are approaching -3 from right side. In the number line पे -3 approach करेंगे from the right end. So here limit h tends to 0, 3 times -3 plus h minus 5. So now if you open the bracket, limit h tends to 0, and this is -9 and plus 3h and minus 5. Directly placing the value of h is equal to 0. There is 5x minus 3. थोड़ा सा उल्टा हो गया. 5x minus 3 is this. 5x minus 3. This is 5. This is minus 3. Now it comes out minus 15, and this is 5 minus 3 at the end. So again, so h is equal to 0. The value comes out minus 15. h is 0 plus 0 minus 3. तो ये आ जाता है again minus 18. So यहाँ पे हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बोथ आर इक्वल्स. Only thing is to find the functional value. So functional value के लिए हम डायरेक्टली प्लेस कर देते हैं x की जगह -3. तो our functional value, so now our functional value f of -3 will be 5x. x की जगह प्लेस कर देते हैं -3 and -3. Now again this value -15 -3. Now it is -18. So all values are here. Left hand limit is equal to right hand limit, so function is continuous. So now in this part left hand limit already हमने calculate किया था. Left hand limit is equal to -18, and right hand limit किया था हमने. Right hand limit at -3 is equal to, once again, x tends to -3 plus fx की वैल्यू रख देते हैं 5x minus 3, and here if I go limit h tends to 0. So now यहाँ पे प्लेस करना है हमको in this part of this ones. For right hand limit के लिए x would be placed -3 and plus h. This is for the right hand limit. तो x की जगह अगर रख देंगे इसको 5 -3 plus h bracket close -3, and this is close the square bracket. So अगर इसको simplified करेंगे तो the value comes out limit h tends to 0 multiplied करेंगे तो what it comes out -15 plus 5h and -3. So directly place the value of h की जगह 0 रखनी है because limit is h tends to 0. Finally the value -15 plus 0 -3. Now it comes out -18. Now last thing,
फॉर द फंक्शनल वैल्यू, तो फंक्शनल वैल्यू निकालना है हमें, तो डायरेक्टली प्लेस x is equal to -3, so this become 5 into -3 -3. So now this value is -15 and -3. This is -18. So here all the values are equal. Means the function is continuous. Our left hand limit is equal to right hand limit is equal to the functional value at function की value at -3. So all has a -80. So function is fx is continuous is continuous at x is equal to -3. Now last value for x is equal to 5. So we have to find out whether the function is continuous at 5 or not. So now at the point x is equal to 5, so हमको चेक करना है लेफ्ट लिमिट, तो whether the limit exists or not, if exists whether it is equal to or not. तो लेफ्ट लिमिट के लिए हम जाएंगे. So now we are approaching, अगर ये हमारे पास नंबर लाइन्स है, 5 is here and this is minus infinite and this is a plus infinite. We are approaching 5 from the left hand side. So that's why यहाँ पे limit में we have 5 के पर minus, putting the value of fx. Now here limit x tends to, या तो ऐसे भी आप रख सकते हैं -5 and putting the value of this 5x minus 3, 5x minus 3. So if you convert this in the last point, if you convert this one, x की जगह हमें रखना पड़ेगा 5 minus h, 5 minus h. So what it comes, limit h tends to 0, 5 times of 5 minus h and at the end of -3. So now if you simplify this one, 5 into 5 is 25, outside is limit h tends to 0 and 25 minus 5h and -3 at the end. So now directly placing this value, what comes out, 25 minus h is equal to 0 and -3. Now the value of 25 minus 3 is 22. 22 is the value. Our left hand value is 22. So now for the right hand limit. So right hand limit जाना है for 5 के लिए. So let us do for the right hand limit. The right hand limit is equal to limit 5 plus putting the value of fx, which is 5x minus 3, 5x minus 3. तो यहाँ पे भी if I go for with the help of h, so we have to put here एक सब्स्टिट्यूशन कर लेंगे यहाँ पे, do the substitutions putting x is equal to 5 plus h, like जैसे हमने यहाँ पे किया था with for this. So here to do the same thing with it, limit h tends to 0, x को रिप्लेस कर देंगे by the value of 5 plus h, 5
प्लस h माइनस 3 ब्रैकेट्स बंद विद दिस वन. नाउ फाइनली इट वैल्यू ये वैल्यू आ जाएगा हमारे पास लिमिट h टेंड्स टू 0 मल्टीप्लाइड 25 प्लस 5h एंड माइनस 3. नाउ प्लेसिंग द वैल्यू h इज इक्वल 0, तो ये वैल्यू मेरे पास 25 प्लस h 0 माइनस 3, इट कम्स आउट अगेन 22. सो 22 हमारे पास आ गया है. नाउ लास्ट वन इज फॉर द फंक्शनल वैल्यू. फॉर द फंक्शनल वैल्यू के लिए वी हैव टू पुट यस फंक्शनल वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए लेट अस डू 5 डायरेक्टली प्लेस f of 5 here, putting here f of 5. Now it comes out 5 into 5 and minus 3. So this value becomes 25 minus 3 is 22. So now here the function is also all value left hand limit. Our left hand limit is 22 and the right hand limit of our value of the right hand limit is again 22 and functional value we have again 22. All are equal, so function is continuous. So we say that function is continuous at fx. So fx is continuous. The result is fx is continuous. Continuous at x is equal to 5. It means that this function fx is continuous all the given numbers. Question number 2, examine the continuity of the function fx at x is equal to 1. So we will do these questions like in the question number 1. So now its solution is first find the left hand limit, right hand limit and the functional value at x is equal to 1. So now first find the left hand limit. So इसका left hand limit निकालते हैं. तो left hand limit at x is equal to 1. So now left hand limit we are approaching 1 on the number lines from the left hand side. So now limit x tends to 1 minus 1 की पावर माइनस कर सकते हैं. Now fx is equal to limit minus value of fx है twice x square minus 1. So now if I change, अगर हमको h tends to 0 थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा तो we have to put x is equal to 1 minus h. तो 1 minus h करेंगे and h tends to 0 हम लगाएंगे यहाँ पे. Now this will becomes our left hand limit. Now this value become limit h tends to 0. Now replacing, यानी कि हमको करना है x के जगह 1 minus h. Where is the x? Put x is equal to 1 minus h. Now this thing becomes finally limit h tends to 0 and this is 2 times of 1 minus h whole square and minus 1. Now this questions, तो या तो हम 1 माइनस एच का फॉर्मूला लगा के ओपन कर दें या डायरेक्टली एच की जगह 0 प्लेस कर दें. बोथ हैव द सेम वैल्यू. सो नाउ हम डायरेक्टली प्लेस कर देते हैं 2 टाइम्स ऑफ 1 माइनस 0 होल स्क्वायर एंड माइनस 1. आफ्टर सॉल्विंग द वैल्यू कम्स आउट
1 minus 0 is 1, square of 1 is 1 and minus 1. Finally ये वैल्यू हमारे पास 1 आ जाता है. This is the 1. Right hand value of this one is 1. And now left hand limit. This is our left hand limit. तो right hand limit के लिए आ जाते हैं. For the right hand limit at x is equal to 1. So now इसको लिखते हैं 1 plus of fx, putting the value of fx which is 2x square minus 1, 1 के पावर प्लस, ये आगे भी हम रख सकते हैं 1 plus, both will be the same thing, and here 2x square minus 1. So this is the value of a function fx. Now next, so अगर हमें या तो we put the value of x is equal to 1 directly here, so it comes out 1 square minus 1 is again 1. या हमें क्या करना पड़ेगा, something to change. अगर in terms of थोड़ा सा variable change कर दें, x is equal to 1 plus h and h tends to 0. ये हम ये approach कर सकते हैं. Now this approach, under this approach h tends to 0 and in place of x को replace कर देंगे हम लोग. We have to replace 1 plus in the function of x is replaced by 1 plus h. This is a 2x square minus 1. तो क्या बनता है देखते हैं. Limit h tends to 0 and outside is 2 and inside is 1 plus h whole square. 1 plus h whole square minus 1 and close in the square bracket. So now what comes out directly, h की जगह 0. Now 1 plus 0 whole square and minus 1. So 1 plus whole this quantity becomes 2 into square of 1 minus 1. So 2 minus 1 is again is 1. So ये value हमारे पास again 1 आ गया right hand limit. Now only let's do for the value of the function at x is equal to 1. तो value of function at x is equal to 1 के लिए हम क्या कर देंगे, x की जगह directly place 1. Now it becomes 5 into 1 square minus 1. Now this becomes 2 minus 1 is 1. So here all values, left hand limit, right hand limit and the functional value, left hand limit, right hand limit and the functional value all are equal, which is the value is 1. So function is continuous. We said that fx is continuous at x is equal to 1. तो ये तरीका हमारे पास है, the method of solving this problem या checking whether the function continuous है या नहीं है. Now this question number 3, examine the following functions for continuity. So a, b, c, d, these are the 4 values we have. Now इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करनी है, पहला पार्ट है a for checking whether the function is fx is equal to continuous है कि नहीं है. So इसका डोमेन हमारे पास आ जाता है. इट्स डोमेन इज सेट ऑफ रियल नंबर. सेट ऑफ रियल नंबर्स माइनस इनफाइनाइट से ऑल वैल्यूज विच इंक्लूड फ्रॉम माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट. ये इसका डोमेन है. कोई भी डोमेन में से हम क्या कर लेते हैं, टेकन एनी रियल नंबर फ्रॉम द इट्स डोमेन. सो देन चेकिंग लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, फंक्शनल वैल्यू. सो सपोज हम क्या कर लेते हैं, एक्स इज इक्वल टू सी, कोई जनरल पॉइंट ले लेते हैं सी. एक्स बराबर सी इज any real number from the domain
तो डोमेन में से फ्रॉम द डोमेन ईयर इस फंक्शन का डोमेन जो है आर इज द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन। कोई भी रियल नंबर ले लिया, नाउ फॉर इट योर लेफ्ट हैंड लिमिट इज गॉट टू लेफ्ट हैंड लिमिट एट एक्स इज इक्वल सी निकाल रहे हैं हम लोग। नाउ दिस वैल्यूज बिकम लेफ्ट हैंड लिमिट एट एक्स इज इक्वल सी। सो जो अप्रोच है एक्स सी माइनस approaching the point C on the number line from the left hand side. C minus means this one. Now corresponding value of fx. Now limit x tends to C minus value of fx is x minus 5. ये हमारे पास आ जाता है x minus 5। अगर हमको s से जाना है तो हमें प्लेस करना पड़ेगा। If I goes put here x is equal to c minus h, ये वैल्यू रख करके हम इसको चेंज कर दें। लिमिट h टेंड्स टू 0, x की जगह प्लेस कर दें c माइनस h एंड माइनस 5 एंड ब्रैकेट क्लोज ऑफ दिस वन। तो यहाँ पे डायरेक्टली प्लेस कर सकते हैं c h की जगह 0 माइनस 5, तो ये वैल्यू मेरे पास c माइनस 5 आ जाता है। दिस इज अवर लेफ्ट हैंड लिमिट। सेम में फॉर द राइट हैंड लिमिट हम आते हैं। फॉर द राइट हैंड लिमिट एट एक्स इज इक्वल सी। सो नाउ इसका लिखने का तरीका c प्लस होगा। नाउ एफ एक्स, नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ एफ एक्स इज x minus 5. Now this h tends to 0, अगर h tends to 0 से जाएंगे तो we have to put here, क्या पुट करना पड़ेगा यहाँ पे, x को रिप्लेस कर देंगे c प्लस 5 c प्लस h से, बिकॉज हमें c का वैल्यू थोड़ा सा मोर देन c रखना है। तो h ठीक है, समथिंग वी हैव वेरी स्मॉल वैल्यू, बहुत छोटी सा h का वैल्यू बहुत छोटा, वी हैव एडिंग इन c। सो नाउ h टेंड्स टू 0 से इफ आई गोज तो वी हैव टू राइट x को रिप्लेस कर दें c प्लस h से, तो ये हमारे पास राइट हैंड लिमिट हो जाएगा। नाउ दिस वैल्यू बिकम्स लिमिट h टेंड्स टू 0 एंड दिस इज x माइनस 5। x को रिप्लेस कर देते हैं c प्लस h ब्रैकेट क्लोज एंड माइनस 5 and this one. So now putting h is equal to 0, this is algebraical function c plus 0 minus 5, again ये वैल्यू c minus 5 आ जाता है, c minus 5. So now for the functional value के लिए हम डायरेक्टली x की जगह दिस रियल नंबर प्लेस करना, तो वैल्यू ऑफ द फंक्शन, value of the fx at x is equal to c is equal to f of c, which become c minus 5. So we are all have the same value. This is our functional value, this is our left hand limit, this is our right hand limit. All values are the same, so function is continuous at on all real numbers in the domain of the function. So ये हम कह सकते हैं, यहाँ से conclusion आ गया, fx is continuous in the domain of fx. So it means that everywhere where the function is defined, it is continuous. Where the function is defined, it will be continuous.